Started the recording. Let's listen to the audio. Very no problem. No problem. Very simple. Let's go. Taking more 45 minutes. My favorite food. Uh, okay. Did I tell you that anybody here is preparing for any general competition here? Any particular person? Anybody is preparing for general competition exam like banking, SSC? You are preparing already? You are preparing already for SSC? Uh, you have started? Okay. And you too, Rajlakshmi? Okay. Well, actually, I'm going to start a class for specific exams, and I'll tell you about it after the lesson is over. Okay. Listening section. My favorite film. There are some banners here, posters. Hata poster, Nikla Hero. High Noon, Pride and Prejudice, Gone with the Wind. These are all classics, guys. They're all lovely films, okay? If you ever find time, I have watched Pride and Prejudice, and this girl in the photo that you see, what's her name? She looks more like Eliana de Cruz, and she's very beautiful. When I watched this movie, I instantly fell in love with this girl. So beautiful, so attractive, such an amazing actress. Now she's old. In this movie was, I think, in the 1990s. Okay. This film is old a little bit, but not compared to High Noon and Gone with the Wind. These films are really old. I think Gone with the Wind was in the 40s or 50s. Yeah, right. When was the, yeah, the time is given here, right? Yeah, High Noon, 1939. Gone with the Wind was in 1939. And High Noon was in 1950, 52. And Pride and Prejudice was in 2005. Okay. So now it's 19 years since the movie. So the girl doesn't look the same, anymore, but she was amazing. I have also read the book. Pride and Prejudice is a novel by Jane Austen. So I read the book in 2007 or 6 or 7, and it was an amazing story. It made me think, actually, how people have different married lives. You will see different people have different married lives. Their expectations, their success, their feelings for their married life is different because of their choices, because of the reasoning of their choice. Like in Pride and Prejudice, there are 4 sisters, and they all 4 marry for different reasons. Somebody marries someone because she thinks he's a good guy. I can't find better than him. There is no love. Okay? It's a conscious calculation. I am this beautiful. He's that handsome. I think it is a good thing. I can't find better than him. Marry him. Okay? So that is one way of deciding. Okay. Some people marry because somebody has very good looks. So you just fall for their good looks. So in this movie, in this novel, different girls show
that they choose their husbands for different reasons. Men also choose their wife for different reasons. But the perfect marriage would be, I mean, perfect marriage is nothing, there's nothing like perfect marriage, but still, the right choice should be based on love. You think that you love that person and you cannot feel that way for somebody else. That's why you should choose that person. And it's pretty complicated. It's not that easy that I say it in 2 lines and you'll understand. You got to read the novel if you're interested. And most of you guys are in that age where you should read. And if you can't, at least watch the movie, Pride and Prejudice. You won't regret. You will definitely have a good time. Anyways, we have 6 people here: Derek, Mandy, Frank, Nora, Sam, and Helen, and they all talk about their favorite films. Derek's favorite film is Jaws. Derek's favorite film. Derek favorite film or Derek's favorite film? Derek's favorite film. Plural बोल रहे हैं क्या हम? नहीं, Derek का favorite film. Derek's favorite film is Jaws. This movie came out in 1975. And in this film, the star was Robert Shaw. Okay. Next, Mandy's, go ahead, make sentence. Mandy's favorite film is Pride and Prejudice. This film came out in 2005, and the star in this film was Keira Knightley. Yeah, Keira Knightley. Keira Knightley. Yeah, I forgot that girl's name. It was Keira Knightley. Beautiful girl, Even when she's crying, you will feel like she's smiling. This is one quality I like about Hrithik Roshan. Have you seen Hrithik Roshan crying in some films? Even when he's crying, his lips are trembling. His expression will be such that you'll think he is smiling. These people look cute even when they're crying. Most of us look silly when we are crying. Nah? Yeah, we look very silly. We look really, really silly when we are crying. And that's why we don't want to cry in public. When I cry, I look so silly. Okay. And, Keira Knightley and Hrithik Roshan, both of them have one quality. They look cute and attractive, even when they are crying. आपको हिंदी समझ में आई कि जब रो रहे होते तब पर भी अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं. इसके लिए मैंने even when कर दिया. Even when they are, okay, even when they're crying. Okay. They look cute. They look attractive. Now, Frank's favorite film is High Noon. This film came out in 1952, and the star in this film was Gary Cooper. Gary Cooper. Okay. Nora's favorite film is Breakfast at Tiffany's. No. Gone with the Wind. Gone नहीं, gone. ओ स्पेलिंग ओ काफी कंफ्यूज करती है. ठीक है, क्योंकि DONE होता तो डन होता. ठीक है ना. तो स्पेलिंग ओ कैन कंफ्यूज यू वेरी मच. इट इज गॉन. इट इज नॉट गोन. ओके, इट इज गॉन. गॉना होता है शादी के बाद, उसमें से आ हटा लो. गॉन. ओके, गॉन विद द विंड. इसका मतलब होता है बस निकल गया, सड़क से निकल गया. He was gone with the wind, but फट से निकल गया, एकदम खत्म कहानी, हिस्ट्री बन गया वो. Gone with the wind, हवा के साथ निकल गया. समझ रहे हो ना, हवा चली वो निकल गया. Gone with the wind. Okay, and this film came out a long time ago, nearly 100 years, 85 years ago, 1939. And who was the star in this film? Clark Gable. Yeah, one of those stars of the golden age of Hollywood. Then Sam's favorite film. Oh, Sam, is it you? Is it about you, Sam? No, another Sam. Okay, Sam's favorite film is Star Wars 6, Return of the Jedi. This film came out in 1983. And who was the star in this film? Carrie Fisher. Okay. And Helen's favorite film is Breakfast at Tiffany's. Breakfast. When we say it, हम लोग fast को जोर डाल देते हैं. नहीं डालना चाहिए. जैसे
उस दिन जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे थे वहां पे पोएम, ओके, मैं पढ़ रहा, आप बोल रही थी पोएम के बारे में। होता है क्या है, हम लोग POEM देखते हैं ना, तो हमें बचपन से क्या बोलने के लिए सिखाया, एम पे जोर डालने के लिए, लेकिन जोर ओ पे डालना है। बस आप इतना खाली कर लो, आपकी प्रोनाउंसिएशन लगभग सही हो जाएगी। हल्का सा चेंज और करना है, बोलो पोएम, बस खाली पो पे खाली जोर डाल दीजिए और एम पे जोर मत डालिए। पोम, ओके, हाँ, लगेगा पोम बोल रहे हैं, राइट। लेकिन आप दोनों तरह से बोलते हैं, पोएम बोलते हैं और पोम बोलते हैं, यानी जोर खाली पो पे होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ज्यादातर हमारी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेंट, स्ट्रेस। स्ट्रेस सही जगह नहीं चला था, एम पे, एम पोएम, ठीक है, एम नहीं होना, पोम, ओके। वैसे ही यहां पर क्या था, ब्रेकफास्ट, स्ट्रेस शुरू में डालिए, ब्रेकफास्ट। हाँ, वो फर्स्ट FAST को बहुत तेजी से बोल के निकल जाना है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एट टिफिनीज। Oh, this movie came out in 1961, and who was in this film? Audrey Hepburn. The star in this film was Audrey Hepburn. Okay. Now listen again and write the name of a person next to a reason why they like the film. Who likes the film because of the love story? Sam likes this film because of the love story. Who likes the film because of the city? Helen likes the film because of the city. Who likes the film because of the music? Derek likes it because of the music. And the interesting story is the reason for Nora. Nora likes her favorite film because of the interesting story. Who likes the film because of the clothes? And who likes the film because of the ending? Frank. Frank likes it because of the ending. All right, fine. Notice that in all these reasons, we are saying the love story, the city, the music, the interesting story, the clothes, the ending. Okay, we are talking about a particular love story, the love story in that film, the city in that film, the music of that film, okay, and the interesting story of that film, the clothes we people wore in that film, and the ending of that film. So ये सब फिक्स्ड कर दिए, कौन सा पता है तुमको, वही वही, हाँ, तो द लव स्टोरी। हु लाइक्स द फिल्म बिकॉज ऑफ द लव स्टोरी, ये सुनने के बाद ही हो सकता है, ऐसे ही मैं किसी जगह चला जाऊं और पूछूं हु लाइक्स द फिल्म बिकॉज ऑफ द लव स्टोरी, तो ये अजीब क्वेश्चन है, किसका कुछ सेंस नहीं बनेगा इंग्लिश में। अगर मुझे पूछना है यहाँ पर कितने लोगों को फिल्में पसंद आती हैं अपने उनके मतलब स्टोरी की वजह से, तो मैं पूछूंगा हु हियर लाइक्स फिल्म्स, द फिल्म नहीं, फिल्म्स, बिकॉज ऑफ द स्टोरी और बिकॉज ऑफ देयर स्टोरी। ऑलराइट, लेकिन हाँ हमें पता है कुछ 6 लोगों की बात सुनी है, इसीलिए हम लोग इस तरह से बात करें। हु लाइक्स द फिल्म बिकॉज ऑफ द लव स्टोरी? हु लाइक्स द फिल्म बिकॉज ऑफ द लव स्टोरी? Sam, right? Got it? Who likes the film because of the city? Right. Now we are going to listen to these people. Let's see. आर्टिकल द इतने तरह से इंग्लिश को अफेक्ट करता है जो आप समझ नहीं सकते, उसको ना धीरे धीरे अप्रिशिएट कर पाओगे आप। आर्टिकल द खाली आ जाता है और कितनी चीजें बदल जाती हैं चीजों के बारे में, इसका एहसास धीरे धीरे आपको होगा। एक कॉमन बात हमेशा याद रखना, बोलने वाले 90% केसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता रहेगा। द इसलिए लगाते हैं, उनको पता होता है कि जो सुनने वाला है उसको एहसास है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हस्बैंड आकर के अपने बच्चों के बारे में पूछता है अपनी वाइफ से, वेयर आर द चिल्ड्रन, क्योंकि उसको पता है कि वाइफ को पता चल जाए कौन से बच्चों की बात कर रहा है वो। इमेजिन करो कि उसके एक भी बच्चे ना और हस्बैंड आके घर पूछे वेयर आर द चिल्ड्रन। Your sense of humor, Sajid. Okay, so guys, imagine a husband and wife have no children. और घर आकर के पूछे where are the children, तो वाइफ देखिए उसको, what happened to you, which children are you talking about? Okay, और उसके 2-4 बच्चे हो, घर आके पूछे where are the children, तो वाइफ बोलेगी हाँ
They're at school, they're playing, they're sleeping, they're on the roof, they're with their friends. Okay, वो तुरंत समझ जाएगी. The children. All right. तो धीरे धीरे ध्यान देते रहिए इस द वाले वर्ड. हालांकि आप कहाँ कहाँ ध्यान दोगे ना. आप एक इंसान बेचारे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. माई फेवरेट फिल्म. लो लो. I think I have removed it from here. Okay. Unit 7, Exercise 7, Parts 1 and 2. 1. Derek. My favourite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because... Okay, everyone. Let's focus. My favourite film is Jaws. My favorite film is Jaws. The straightforward way. Yeah? Some people like speaking in a straightforward way. Everybody has been asked the same question. Tell us about your favorite film. This person has started this in this way. My favorite film is Jaws. I saw it years ago and I saw it years ago. I saw it. Everybody understands I saw. V2. Okay, I saw it. Yeah. I saw it years ago. कई साल पहले देखे थे. कैसे कब बोला उसने कई साल? मैंने तो नहीं बोला. तो फिर कैसे पता? अगर आप हिंदी में बोलो बरसों पहले मिले उससे, तो क्या हुआ? कई साल पहले कि 1-2 साल पहले? जब मैंने बरसों पहले उससे मुलाकात हुई थी. तो you mean a long time or a short time? English is very similar. I saw it years ago. A long time ago? Yeah, a long time ago. I saw it years ago. Inaya was born years ago. Right, Inaya? Okay. I saw it years ago. I was so frightened I couldn't watch. I closed my... 1. Derek. My favourite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I saw it years ago and I was so frightened. I couldn't watch. So when he said I was so frightened, it means the movie was? Easy. The movie was? Yeah, frightened, frightening, pairs. I was so frightened, I couldn't watch. It happens with young children. Some people, when they watch a frightening movie, they close their eyes. In the right moment, when the ghost appears, they close their eyes. How many of you like watching frightening films? Do you enjoy watching frightening films? All of you. Ghost films? Really? Okay. Ayat, do you like watching ghost films? Not so much. Inaya does. Inaya says she likes it. So, do you watch it alone or with her or with mommy? With her. But she doesn't like watching. You make her. Ayat, dekho na. Because that's her nature. That's her personality. Ayat, open your eyes. Ayat, bhoot, Ayat, open your eyes. It does that? Does she do this when you're watching together? Okay, have you seen any frightening films together? You have, but you didn't enjoy it.
Do you feel that the ghost is gonna come out of the movie? Then why don't you watch? It's boring. You know it's not real. That's why. Um, happens. So, what about your mom and dad? Do they like watching frightening films? Your father likes watching frightening films. Mom doesn't enjoy it so much. I and my wife both love watching frightening films, and my daughter likes it too now. But when she was very young, even your age or younger, I showed her a frightening film, and she got so scared. Oh my God! I showed her Oiza. It's not the right way pronunciation. I think it is pronounced something else. हम इसको ओइजा बोल दे रहे हैं, लेकिन उसका pronunciation ओइजा नहीं है. It is pronounced differently. And it was so scary. And Aditi was only 4 or 5 years old. And I didn't realize कि ये गड़बड़ हो जाएगा. I didn't realize I was stupid. So I said, Aditi, there is a very interesting movie, ghost movie. She was a kid. She said, okay, let's watch. I should have kept her away, because it was clearly A film. Sometimes it is A because of the fear scenes as well. Aditi watched it with me, and then she stopped in the middle, of course, but that was enough to scar her. मतलब उसके दिमाग पे एक डर का छाप छूट गया. The movie. And then for many years, I think for about 5, 6 years, she was very, very scared all the time at night. She wouldn't go to the bathroom alone because of that one film. And I felt so guilty, that I showed her that movie. I was such a careless person. I didn't think of it. हो जाता है कभी कभी, excitement में you just don't realize these things. Yeah, she still tells me, why did you show me that film? But now she's not that scared. She says she has overcome that. She's a reasonable person, and reasonable people do, reasoning in their head. So now she's 15. She doesn't feel scared. She just feels scared because of she calls it jump scare. कहते हैं ना अचानक से जो आएगा. So that is what scares you. And that's the exciting part. We all know jump scare, when you're watching the movie and suddenly the ghost appears with a dirty face or something, horrifying face. Like in the movie, if you watch that movie Haunted 3D, in that movie there was one big jump scare, man, when the professor suddenly appears on the screen. Everybody in the cinema hall screamed. Every single person. There was unison in the screaming. सब एक साथ चीखे थे. Oh my God, that moment in the cinema hall was fantastic. उसके बाद जो हंसे सब, because डर तो गए सब. Then they were all laughing because that jump scare. Yeah. Everybody knows these things are not real, but वो होता है ना, suddenly it comes and startles you. So I like watching, horror films, frightening films at the cinema hall because of this moment कि सब एक साथ चीख जाते हैं when there is a jump scare. When I'm watching a movie like that, I'm always holding hands with my wife. पकड़े रहो. It just gives you a little more confidence. Okay. So he says, I was so frightened I couldn't watch. जरा सो पर ध्यान देना. I was so frightened I couldn't watch. इतना डर गया था ना कि देख ही नहीं पा रहे. I was so frightened I couldn't watch. Couldn't watch. Can't watch. Couldn't watch. Past tense. I was so scared I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because I closed my eyes. I closed my eyes. Past tense. मैंने आंखें बंद कर ली. I closed my eyes. Yeah, I won't translate every word, okay? Yeah, you guys will understand. I closed my eyes. I was scared. I liked it because like sharks. I like sharks. I liked it because I like sharks. I like this film because I like sharks. मुझे sharks अच्छे लगते हैं. This man likes sharks. So this movie is called Jaws, and he's saying sharks. It means it is about jaws of sharks. Shark is a fish, right? A very, very scary fish. And sharks have very strong jaws. Once they catch somebody, they won't let go. Their jaws, jabde, okay, are very powerful, very strong. I think some of the strongest jaws are the jaws of a shark, the jaws of a lion, by the way. A lion can hold something with its jaws, something heavier than its body, and can pull just with its jaws. Jaws in Hindi, spelling.
Okay, why do we say jaws always, plural? Why not jaw? Because we have two, the upper one and the lower one, the upper jaw and the lower jaw. And we have jaws. Everybody has jaws. Okay, one moves, the other doesn't move, right? Which one moves? The lower one moves, okay? In some animals, they have two moving jaws, okay? We have one moving jaws. The lower one moves, the upper one doesn't move, okay? So listen to this particular line. I liked it because I like sharks. I really do. Yeah, I really do पे थोड़ा ध्यान देना कैसे बोलते हैं वो. Really do. And I enjoy. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because I like sharks, I really do. And I enjoy frightening films. Also, I loved the Jaws. I liked it, past tense. I liked it because I like sharks. I really do. तो कभी कभी बस अगले बार ऐसे रिपीट करने से वो बात एम्फसाइज जाती है. जो आपने कहा ना उसमें आई रियली डू करने से वो बात एम्फसाइज जाती है. फॉर एग्जाम्पल आई हेट मैथ्स, आई रियली डू. तो आपने आई हेट मैथ्स के बाद आई रियली डू करके क्या कर दिया? एम्फसाइज कर दिया उस बात को. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. आई हेट मैथ्स, आई रियली हेट मैथ्स. इतना दोबारा बोलने की जगह जरूरत नहीं है. आई हेट मैथ्स, आई रियली डू. जरा गौर सुनना. आई एम हैप्पी, रिपीट करना वही रियली वाला. सही दिमाग आपका सही चल रहा है रानी? नहीं बेटा, डू क्यों चाहिए? क्योंकि आपने कहा आई एम हैप्पी. तो आप इसमें रुकिएगा. इसमें आपको बोलना था आई रियली एम. क्या बोलना था? आई एम हैप्पी, आई रियली एम. सपोज योर फ्रेंड इज टेलिंग यू दैट ही इज गॉट अ न्यू गर्लफ्रेंड. मन में आपके थोड़ा सा हो गया जेलसी. ओके, पूछा आर यू नॉट हैप्पी? आई एम हैप्पी, आई रियली एम. बट आपको पता है नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं. हाँ खुश है, सही में खुश, बहुत खुश है. आप हिंदी में वैसे 2-3 बार बोल देते हैं ना. इंग्लिश में भी कर सकते हैं. आई एम हैप्पी, आई रियली एम. ट्रस्ट मी. Actually, I'm worried about something else. That's why I'm not really showing it. But I'm really happy for you. Okay. But actually, you're feeling jealous. Okay. All right. So any situation, any statement, you make that statement और उसके बाद आपको लगे ना कि वो आप और अच्छे से बोलना चाहते हैं और उसमें emphasize करना चाहते हैं. I'm sad. India didn't win this match. I really am. Okay. Okay. I'm sad India didn't win the match. I really am. Okay. I really am means I am really sad. उसी बात का. लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि बी वर्ब के लिए पहले really आ गए फिर I really am, उसके बाद बात खत्म कर दे. ठीक है? Any problems, anyone? So he said, I like films. I like sharks. I really do. I really do करके उसने क्या किया? I like sharks को emphasize किया. ये बात आप कभी सुने नहीं होंगे कभी किसी के मुंह से पहली बार इंग्लिश में. अभी सुन रहे हैं, अभी आपके दिमाग से निकल जाएगा. अभी सही लगेगा कि हाँ सही समझ गए, सही बात है, ठीक है. आप 1 से 2 दिन बाद भूल जाएंगे क्योंकि आपने पहले कभी सुना ही नहीं ऐसा कुछ, और आगे भी नहीं सुनने वाले. बिहार शरीफ में सुनने वाली ये लाइन किसी से हाँ ये सुनेंगे. इफ यू आर वाचिंग लिसनिंग टू अमेरिकन और ब्रिटिश पीपल टॉक अ लॉट, ये पक्का सुनने को मिल जाएगा बिकॉज ये उन्हीं के स्टाइल है. तो दे टॉक लाइक दिस. तो आप वो करोगे नहीं क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है अमेरिकन ब्रिटिश लाइफस्टाइल में, तो आप भूल जाओगे. इसलिए बेहतर है जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो फाइल अ कपल ऑफ टाइम्स. ओके, मे बी आफ्टर 2 days गैप. ओके, सो दैट यू रिमेंबर हाँ सर ने एक्सप्लेन किया था. आई रियली एम, आई रियली डू, आई वाज एक्साइटेड. उसका फिर आपको इसी को दोहराना है. आई वाज एक्साइटेड, आई रियली वाज, आई रियली वाज. हम पूरा एक्साइटेड थे. Okay, I didn't tell you about that thing. The other day I was telling you that a foreigner was visiting my friend, here. I might have told you. Okay, that didn't happen. It was a fraud actually. She was a fraud. Okay, she was a scammer. She got in touch with my friend and he told me about her, and I talked to her on the phone, and I thought she was talking a little strangely. She was not as warm as I was expecting. I have lots of friends from other countries, and when I talk to them, I know how it feels. They take interest in my life, they take interest in my job, they take interest in who I live with. They have a lot of interest in me, and they ask me questions.
That lady asked nothing, I'm coming tomorrow and this, that, I'm taking the plane down. Um, she was just a fraud. She was just a scammer. Okay. My friend was excited to meet her. He really was. Okay. He was very excited about meeting her. Really was. देखा? ठीक है, मैंने emphasize कर दिया. उसको तो बहुत excitement था कि वो, he thought he was handsome. That's why somebody from another country was coming to see him. But that's not how it was. Okay. We guys worry too much about looks actually. When people connect with you, they don't connect with you just for your looks. They connect with you for the kind of person you are, if somebody does connect with you. So stop valuing your face too much. Yeah, it's just the invitation. Face is just the invitation. But people don't stay there because of the invitation card. They stay there because of the menu, the food you offer, right? And the welcome you give. So face is just the invitation card. That's it. Okay. Moving on. Music. Duh, duh. I liked it because I like sharks, I really do, and I enjoy frightening films. And I enjoy frightening films. I enjoy frightening films. Okay. I enjoy romantic films. I enjoy suspense thrillers. I enjoy something. Always say enjoy and then something. Don't say enjoy. I enjoy something. Something is really necessary. You will have exams in India, big exams like CAT exams, Bank PO exams, and there this word enjoy will be asked. They will make a sentence with the word enjoy, and they will remove the object, and you will have to spot, oh, you are writing I enjoy. No, I enjoy something. Something must be there. Okay. I enjoy my birthday. I enjoy this class. Okay. Things like this. But I enjoy a lot. No, it's not a good sentence. I enjoy a lot. What? Enjoy what? You must put an object. After enjoy, just like after like, you must put an object. Also, I loved the Jaws music. Use of also. Also, I loved the Jaws music. Notice this. He put the word also at the beginning of the sentence. Notice this. Closed my eyes. I liked it because I like sharks, I really do, and I enjoy frightening films. Also, I loved the Jaws music. Did he not add another reason? He added another reason for liking the film. So also is used to add one more point. Okay, guys. So when you're listening, and I'm going back again and again, please keep repeating the lines you're listening to. Don't be a passive listener. A passive listener doesn't care. Okay, he just let the audio go. But an active listener who's involved listens and tries to repeat those words in their mind. And this way they learn better. The line was, also, I enjoyed the Jaws music. I loved the Jaws music. Okay. Also is a word we can use at the beginning of the sentence to add one more point. Duh, 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 duh. Let's learn a sentence with word also at the beginning of the sentence, okay? Winter season is my favorite. You have, it's not very hot like the summer. Yeah. Also means I'm going to give you another reason. You have freedom from having a bath every day. It's my lazy reaction, okay? So also, after also, you can add another reason, okay? Why do you want to marry him? He's handsome. Okay. Also फिर full stop के बाद ये नया word है, capital A, फिर comma दे देंगे. Also, he is very rich. दोनों बेकार के reasons हैं. Marriage is not going to be happy because she likes him. She wants to marry him because he's handsome and he's rich. So there will be another person who is more handsome, who is richer, and then. So if you don't have the connection with the person, you will always find somebody better. When you have a connection with someone,
emotional, mental connection, then that person becomes unique for you. And after that, no matter who comes, that person is unique for you. No matter how rich, how handsome another person is, you will never replace that person with that, because you connect. And this is the same about girls. If you like a girl because she's pretty, there will be somebody who is prettier. But when you connect with someone, then that person becomes special, unique. And then maybe other people will come, but that person cannot be replaced. I feel frightened hearing it now. Also is used at the beginning of the sentence. ऐसे तो आप लोग also बोलते ही रहते थे. I ate golgappas, I also ate chaat. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन also beginning में रखते हैं, शुरुआत में sentence के, और उसके बाद एक और बात बोल देते हैं. जो पीछे बात चली आ रही ना, उसी में एक और बात, ठीक है. जैसे आपने बताना है कि आप क्यों बनना चाहते हैं इंजीनियर, तो आप रीजन दोगे. एक रीजन ये, फिर दूसरा रीजन के पहले ऑल्सो जोड़ सकते हो. ऑल्सो एंड ये लाइन रीजन, पूरी बात. Okay, moving on. And I enjoy frightening films. Also, I loved the Jaws music. Da-da, da-da. I feel frightened hearing it now. I feel frightened hearing it now. I feel frightened hearing it now. अब भी सुनते तो डर लगता है. I feel frightened hearing it now. Okay. Sometimes it happens. Some, memories from the past, they just feel fresh all the time. He says, I feel frightened hearing it now. आज भी सुनते तो डर लगता है. I feel frightened hearing it now. I'm not sure who starred in the film. I'm not sure who starred in the film. I'm not sure who starred in the film. मुझे पक्का तो ये नहीं है कि कौन था उस फिल्म में. अब देखो यहाँ पर गौर कर रहा. I'm not sure who starred in the film. Hello? Yes. Obviously, it's my class time. For 3:30 to 5. Okay, talk to you later. So, where were we? I'm not sure who starred in the film. I'm not sure who starred in the film. Okay, इस पे स्टार्ट वर्ड पे ध्यान देना. और मुझे बताओ, ये नाउन है कि वर्ब है या एडजेक्टिव है? I'm not sure who starred in the film. वर्ब लग रहा है ना? वर्ब ही है. I'm not sure who starred in this film. I'm not sure who worked in this film. Right? I'm not sure who worked in this film. Work का synonym ले लिया. I'm not sure who starred in this film. There is a small difference. Dilwale Dulhaniya Le Jayenge was a movie. Shah Rukh Khan worked in this film. So did so many other people, because there were hundreds of characters. Small characters, big characters. They all worked. लेकिन स्टार वर्ब यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे शाहरुख के लिए, काजोल के लिए, राइट. वी विल नॉट यूज द वर्ब स्टार फॉर स्मॉल एक्टर्स, क्योंकि वो स्टार थोड़ी थे. इसीलिए हु स्टार्ड इन द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? शाहरुख खान एंड काजोल. हु स्टार्ड इन द फिल्म? करण अर्जुन एंड सलमान खान. ऐसे करके आप नाम लेते हैं. स्टार्ड इन, आपके इतने सारे लोग थे, लेकिन आपने इन्हीं का नाम लेना है. हु वर्कड इन द फिल्म करण जौहर? लॉट्स ऑफ पीपल. Lots of people work in that film. Okay. So I'm not sure who starred in that film. मुझे पक्का तो नहीं पता है कौन था फिल्म में. हिंदी में से बोलते ना, I am not sure who. मुझे याद नहीं किसने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था. I'm not sure who gifted this phone to me. Who? मुझे याद नहीं आ रहा पक्का पक्का किसने मुझे कॉल किया था कल. I'm not sure who called me. देख लो, सारे वर्ब आ रहे हैं ना. और यही वजह से तुमने स्टार्ट को वर्ब सोचना था, क्योंकि आप कुछ भी वहां बोलोगे, कॉल्ड आएगा, गेव आएगा, गिफ्टेड आएगा. वेयर इज योर सिस्टर? आई वाज लुकिंग फॉर हर. शी इज नॉट हियर टुडे. ओके. वेयर वर वी? आई एम नॉट श्योर हु starred in the film.
I think it was Robert Shaw. I think it was Robert Shaw. It was. पहचानने के लिए ही शी नहीं बोलते, पहचानने के लिए ही शी नहीं बोलते, इट बोलते हैं। उसने पहचानने की बात की ना, आई एम नॉट श्योर हु स्टार्ड इन द फिल्म, आई थिंक इट वाज रॉबर्ट शॉ, हमको लगता है रॉबर्ट शॉ था। ही क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहचानने के लिए इंग्लिश में ही और शी नहीं बोलते। ध्यान से सुनिएगा, दरवाजा खटखटा रहा है, कौन हो सकता है? हु कुड इट बी? हु कुड इट बी? आई थिंक इट इज some stranger, I think at this time. I think it's a relative. Okay. तो फोन करके किसने पूछा पहचान कौन? Is it you, पप्पू? Nah. Is it you, बबलू? Nah. Okay. Is it you, पोलू? Okay. Is it you? तुम हो पोलू? Is it you, बबलू? तुम हो बबलू? नहीं यार, बबलू नहीं बोल रहे हैं। No, it's not me, बबलू। It's not बबलू। It's not। हाँ हाँ, okay. तो ध्यान दीजिएगा, आपने दरवाजा खटखटाया, कौन है? आप नहीं बोलना आई एम एक्स वाई जेड, कभी नहीं बोलना। वो तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं, आप पहचानवाते नहीं है। थोड़ी वजह पे ध्यान दीजिएगा। आई एम आतिफ, तो मैं आतिफ हूं, इंट्रोडक्शन है। जिसको नहीं पता उसके लिए। आप मेरे दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, मैंने कहा कौन? सर हम आतिफ। सर इट्स मी आतिफ। सर आई एम आतिफ नहीं, मैसेज किया नए नंबर से मुझे आपने। ओके सर, it's me XYZ, please add me, add my number, new number sir to the group. It's me XYZ। राजलक्ष्मी का नया फोन पुराना खो गया, भैया ले लिए, फिर नया फोन दे दिए नया नंबर के साथ। तो ये मुझे मैसेज करेंगे, सर इट्स राजलक्ष्मी हियर सर, प्लीज ऐड दिस नंबर। क्या बोलेंगी? सर इट्स राजलक्ष्मी हियर सर। ठीक है, इट्स राजलक्ष्मी हियर। मुझे पता है आप लोग हिंदी में ऐसे नहीं सोच पाते, आपको लगता है आई एम राजलक्ष्मी लिख देंगे हो जाएगा, लेकिन नहीं। आप तो, मैं आपको जानता हूं, आप क्यों मुझे बता रहे हैं आई एम राजलक्ष्मी? ये सिर्फ कब बताया जाता है? जब अगला आपको नहीं जानता है, इंट्रोडक्शन देते हैं। गॉट इट? आई एम एक्स वाई जेड इज द इंट्रोडक्शन। गॉट इट? तो पहचानवाने के लिए कौन सा वर्ड है? इट। कौन हो सकता है इतना समय, इस समय रात में? हु कुड इट बी? ओके, तो आई एम नॉट श्योर हु स्टार्ड इन द फिल्म, आई थिंक इट वाज रॉबर्ट शॉ। ऐसे आपने सुना होगा, इट को हम लोग आदमी के लिए यूज नहीं करते ना, he है, she है, right? But now we are using it when we are identifying someone. Okay. Okay, let's continue. 2. Mandy. I like a lot of films. I like a lot of films. This girl also started straight up, what's your favorite film? I like a lot of films. The question is the same. Your favorite film. What's your favorite film? Tell us about your favorite film. I like a lot of films. आप भी सोच लो, आप पहला वाला की तरह स्टार्ट करोगे या दूसरे वाला की तरह स्टार्ट करोगे? I like a lot of films. But I think Pride and Prejudice is one of my favorites. But I think Pride and Prejudice is one of my favorites. But I think Pride and Prejudice is one of my favorite films. One of my favorites. One of my, कभी कभी कोई वर्ड ना नाउन के तौर पे भी काम करता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी। गौर करो, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, यहाँ फेवरेट एडजेक्टिव है। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, फेवरेट फिल्म्स, फिल्म्स नाउन, फेवरेट एडजेक्टिव। वन ऑफ माई फेवरेट्स, अब फेवरेट इटसेल्फ इज अ नाउन। वन ऑफ माई फेवरेट्स, तभी तो प्लूरल किया। एडजेक्टिव के प्लूरल होते हैं इंग्लिश में, सोचिए। ब्यूटीफुल गर्ल्स की ब्यूटीफुल गर्ल्स, beautiful singular, beautiful plural, beautiful. So adjectives don't have a plural form in English normally. लेकिन यहाँ उसने कहा it is one of my favorites, तो favorites बोल दिया, plural कर दिया favorites से, इसका मतलब it is a noun. Noun के ही singular plural होते हैं। तो I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favorites. I like a lot of actors, but I think Shah Rukh Khan is one of my favorites. Okay, like that. Got it? I loved the actress Keira Knightley in it. I loved the actress Keira Knightley. मुझे बड़ी अच्छी लगी इस फिल्म में जो लड़की थी ना, एक्ट्रेस थी ना, बड़ी अच्छी लगी। I loved the actress Keira Knightley in it. I loved
the actress Keira Knightley in it? Repeat. मुझे बड़ी अच्छी लगी फिल्म में जो हीरोइन थी ना, बड़ी अच्छी लगी. I love the actress Keira Knightley in it. Everybody did. Not only this girl, not only me. Keira Knightley became a big success after this movie. She was very successful, very popular after this film. She was popular anyway, but she became more popular from this film. Yeah, she looked amazing. One of her most successful films. Do watch this movie, okay? बड़ा मजा आएगा तुम्हें. It has everything in it, you know. It's a lovely film, especially if you like movies about human nature, human decisions, and if you want to explore, find out more. वही है ना explore मतलब? If you want to explore human psychology, then this is a good film to watch. Okay. She was excellent. She was excellent. Excellent adjective is used to say very, very good. She was very, very good. She was excellent. Okay. By the way, excellent can mean perhaps the best in that field. Okay. Excellent. Okay. She was excellent, of very, very high quality, of very, very high quality. She was excellent as an actress. Okay. She was excellent. An excellent performance means a good performance or not so good performance. Yeah, more than good. Very, very, very good performance. An excellent performance. Okay. Some days ago, I watched India domestic cricket, on TV, and I saw Akash Deep, the bowler, and a good batsman, useful batsman, a lower order batsman. And I was watching it with my nephew, and I said to my nephew, then soon this guy Akash Deep will be in the team. He had taken 5-6 wickets as well in that match. Okay. All the Indian players were playing, by the way. Okay. And the ones who are in the team as well, they were also playing. Okay. Perhaps Virat Kohli was not there. Rohit Sharma was not there. Bumrah was not there. These guys are like, top players in the Indian cricket. So they don't have to play the domestic, because they already play so much cricket. They need rest as well. They need time with their family as well. And it was an match for those people who are not certain in the team. So like KL Rahul was there, Shreyas Iyer was there, and so many others. And I made the prediction, this guy soon will be in the team and he will definitely make India proud with his batting. And he single-handedly saved the match for India because he helped India avoid the follow-on in this ongoing match. This just finished today, the third cricket test match. If we had gotten to follow on means you have to bat the second time, situation would have been really bad for India because those guys lost 6-7 wickets in 18 overs only. Okay, Australian team. And India got a target of 270 odd runs to win. Unfortunately, the light was not good and we couldn't really continue. It was going to be an exciting match. His role was very crucial. Bumrah has been excellent, exceptional, but Akashdeep is fantastic, with his personality, attitude, and the way he bats. I love the way he bats. I want him in the team, maybe as a third seamer. But Ishant Sharma is no more in part of the team. Muhammad Shami is, I think, injured. He would have been very, very useful in the cricket test team. His place is very important. In this squad, we don't have very good bowling. Akashdeep, if he could just improve his bowling a little bit, he can be a great all-rounder. And suddenly I'm switching to cricket, I know. Sorry about that. But and then this new guy, who's come as a replacement for Hardik Pandya, he's amazing. What is his name, guys? Which Singh, some Singh. He's just superb. He bowls well. He's an all-rounder, Yeah. He's been playing in IPL as well, and he's doing great. And he's been so, so impressive. Nah, he's not even playing. You guys are not following the test match cricket between India and Australia, anyone? Nobody's following. Okay, that's why. I don't have time to watch the whole match, but I do watch the highlights every day. When the play of the day is over, then I watch the highlights. Nitish Reddy, sorry, my bad. I was saying C.
It was ready. Nitish ready. Yeah. Exceptional. I think he's the future. He's doing better than Hardik Pandya. He's playing in Australia, by the way. I don't know why they could not play both. Maybe they should have kept him in place of. They could have, yeah. Maybe they might have thought about Akashdeep is better as a bowler than Hardik Pandya. Okay, cricket is more fun to discuss with those who talk about cricket. You guys are not really. It's okay. Let's continue with what we were doing. What was that? What was the last line? She was excellent. And I really loved the beautiful clothes they wore. And I really loved what? The beautiful clothes. Which beautiful clothes? That they wore. Okay, I love the beautiful clothes they wore. सर जो जोक बोले ना हमको बड़ा मजा आया. I loved the joke sir told. I love the joke sir told. इसके मुंह पे told जो आया ना, ये कोई चीज का रिएक्शन नहीं है, एक चीज छोड़ के. इसको जो बार बार सुनने को मिला ना, तो जोक के साथ टेल सुनने को मिला है, तो सबकॉन्शियसली इसके दिमाग में वो बैठ गया है. इसके पास ऑप्शन था स्पोक का, इसके पास ऑप्शन था सेड का, राइट. बट इसने कुछ नहीं बोला. क्या बोला? टोल्ड. ये इसने डिसाइड नहीं किया कि चलो बोलते हैं टोल्ड. इसको पीछे से इसके दिमाग को जो ट्रेनिंग मिली सुनते सुनते उसने ऐसे. इससे सीख जाओ आप लोग कि अगर आप सोचने पे आ जाओगे ना कि ये करें तो आप फंस रहे हो. आपको बस आदत पड़ जानी चाहिए. आदत कैसे पड़ती है बेटा? मुदस्सिर, सुनते सुनते. आप सुनते सुनते आदत डाल लेते हैं. कैसे? आपने टोल्ड ही क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन था ना आपके पास, स्पोक, सेड, और भी सोचना थोड़ा सा, ठीक है ना. लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, आपने टोल्ड बोला, और सही बोला, क्योंकि आदत पड़ गई. तो अगर आदत नहीं पड़ी है तो आदत पड़ने का इंतजार करिए, और इंतजार पढ़ाने करने का काम समय कम करना है तो क्या करिए? ज्यादा दे दीजिए समय, एक्सपोजर अपने आप को. बस हो गया. सोल्यूशन मिल गया आपको कि अगर आपको जल्दी सीखना है तो ज्यादा घंटे इंग्लिश में बिताने होंगे, और अगर धीरे धीरे सीखना है तो आराम से सीखिए. कुछ मत सुनिए, चल धीरे धीरे. आपके पास मोबाइल फोन नहीं था. अगर होता तो आप अभी कितना ज्यादा जानते होते. इतने समय तक अगर आप घर पे 1-2 घंटे रोज इंग्लिश देखते होते और ऑडियो फाइल सुनते होते, रिकॉर्डिंग देखते होते, जब से आप यहाँ है, तो आपकी इंग्लिश कहाँ होती? ये टोल्ड कैसे आया आपके मुंह पे कि टोल्ड ही बोलना है? हिंदी में तो कोई बताया तो बोलना. ऐसे टेल मतलब बताना होता है. बचपन से जो रटा है, टेल का क्या मतलब होता है. लेकिन यहाँ पर हमने कहा सर जो जोक्स बोले क्लास में बड़ा मजा आया हमको. आई लव द जोक सर. मैंने बोल करके चुप्पी लगाई, उसने बोल दिया टोल्ड. बाकी सब चुप्पी थे, राइट. तो एग्जाम्पल है साबित करने के लिए कि किस चीज से आप पे फर्क पड़ता है. और आप सोच के क्या बोले थे कि टोल्ड सही है, ऐसा सोचे थे? बस मुंह से वही निकला. मुंह से वही निकला जो सही था, वो निकला. क्यों? आपने बार बार सुना है टेल अ जोक मेरे मुंह से. ओके, तो उसके साथ कनेक्शन बना हुआ था, जोक का टेल के साथ. मुंह से आ गया बाहर. सुनने से असर होता है. समझ में आया है कि नहीं आया अभी? अब आप लोग सुनने की कोशिश करिए घर पे, और सुनिए, गाने सुनिए इंग्लिश में. मस्त मस्त गाने हैं जिनकी लिरिक्स आती है स्क्रीन पे, यूट्यूब पे. लिरिक्स सामने रख के गाने सुनिए, खूब मस्ती करिए इंग्लिश में. इंग्लिश में मस्ती करिए, बस इंग्लिश सीख जाएंगे. इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश मत करिए. मतलब कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये वाला एटीट्यूड मत रखिए इंग्लिश के साथ. हम इंग्लिश में मस्ती करेंगे, एंड देन वी विल लर्न इंग्लिश. यही वजह है कि माई एटीट्यूड इन द क्लास इज वेरी डिफरेंट. आई डोंट मेक यू फील लाइक वी आर डूइंग एनीथिंग सीरियस, क्योंकि सीरियस काम करने में आप भाग जाओगे सर. भाग जाओगे आप सीरियस काम जहां कराया मैंने तो. ठीक है, पढ़ाने का तरीका दो होता है. एक होता है मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है. कराटे किड देखा था? कराटे किड, उसमें जाता है बच्चा सीखने के लिए, तो उसका जो ट्रेनर होता है बोलता है नहीं सिखाएंगे, बोलता है प्लीज प्लीज, बोलता है जाके कार साफ कर. बोलता है ऐसे ऐसे करियो साफ, एक ही तरह से, ऐसे ऐसे नहीं करना है, खाली ऐसे साफ करना है. बच्चा ऐसे ऐसे जाके कर रहा है, वो उसका मन में गाली भी निकाल रहा है, ऐसे ऐसे क्यों साफ करना पड़ रहा है. फिर बोला लेफ्ट हैंड से कर. अगले दिन बोला ऐसे करना होगा, वो उसके एक ही हाथ से साफ करना और ऐसे ऐसे करना है. और एक दिन जब उस पर लाठी से वार हुआ ना, तो ऐसे करके रोक दिया. वो बोला वाह ये कैसे हो गया. तो टीचर्स बेहतर जानते हैं, अगर अच्छे टीचर्स हैं तो आपके साथ क्या करें कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएं. मैं आपको प्रेशर इसलिए नहीं देता, मुझे पता आप सब प्रेशर में टूट जाएंगे, फटाक से टूट जाएंगे.
मुझे बताइए कभी आपने किसी इंग्लिश क्लास को इतना एंजॉय किया जितना इस क्लास को करते? खाली इतना बात से खत्म कर दीजिए, बस बात खत्म, बात खत्म। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है आप इंग्लिश से भागते हो, उसी वजह से तो ये परेशानी है सारी। और भागने की रीजन, एक बड़ी वजह टीचर भी था, उसको कनेक्ट करना नहीं आता स्टूडेंट से कि हम जो चाहिए स्टूडेंट को वो पढ़ा रहे हो। मैं मानता हूं कि सचिन को थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, थोड़ा सा मेरे बच्चे को अमन को भी मुश्किल हुआ होगा शुरू में, लेकिन मैं थोड़ा कहता हूँ पेशेंस थोड़ा सा दिखाओ, इसलिए मैं एंटरटेनिंग पार्ट रखता हूँ कि भले ही पढ़ाई ना समझ में आए, एंटरटेनमेंट तो समझ में आएगा ना। तो उसके चलते रुके रहेंगे, देर सवेर चीजें सही हो जाएंगी। वो वेल डन मुदस्सिर बेटा, और कीप इट अप, आप सुनते रहें सारे लोग की। मैं एक दिन ऐसे ही चाहता हूँ कि मुंह से सही इंग्लिश निकल जाए। जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं बेहोश होकर इंग्लिश बोला था, इसी वजह से बोला था, क्योंकि उसको आपको सोचना नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही आता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो अगर आपको बेहोशी में इंग्लिश सीखना है तो ज्वाइन एसटीसी, मतलब बेहोशी में इंग्लिश बोलना है, सॉरी बेहोश होकर इंग्लिश बोलना है तो ज्वाइन एसटीसी। ओके, यस। You see, I know the book favorites. I loved the actress Keira Knightley in it. She was She excellent. was excellent. Now, let me explain. I told you Pride and Prejudice was originally a book. It was originally a novel. Okay. It was written by a female writer from England called, I forgot her name. Okay. So very, very successful. She wrote many stories like Emma and many more. And these are part of the syllabus, graduation, post-graduation. If you're doing English course, like master's degree, bachelor's degree, then you will study these novels, Pride and Prejudice, Emma, and many more. Okay. So yeah, she had read the book. This girl had read the book already. Okay, what happens? When you have a novel has a long story. So it is difficult to show the long story in 2 hours, 2 hours, 30 minutes. Mahabharata is a long story. There's so many events. If somebody tries to make a movie called Mahabharata, most probably the film is going to be a flop. Because people don't like watching so many events in such quick time. Enjoy it, when one episode you watch today and you see the whole thing in detail, and then next episode tomorrow, and then another episode. In 100 hours you watch it, 100 episodes of 1 hour, and you try to show it in 2 hours. It means 10 minutes ago the person was in the palace, and 10 minutes later he is in jungle, all right, killing animals and killing rakshas. Ramayana was never a successful movie. Many people tried to make Ramayana, okay, as a movie. They were all flop, because again it's a long story. Ram gets married, then his mom says you have to go to go to the jungle. Then he goes to the jungle. There is a Hiran, and then Ravan comes and kidnaps, and then Ravan and Ram has a long war battle. So many people die. भी ये सब 2 घंटे में खत्म कर दोगे तो मजा नहीं आएगा ना. You need long time. So this is the reason long stories are not very successful. Movies which are based on long stories are usually not very successful. You see, the Mahabharata was made twice on TV. Okay, and both Mahabharata was very, very successful. Both the Mahabharats were very, very successful. Okay, both the serials. Recently it was on Star Plus, and earlier it was on DD1, I think. Yeah, when I was a kid. So this girl is talking about the book. You see, मतलब explanation. You see, ऐसे करके बोलने का मतलब हम आपको कुछ समझा रहे, कुछ बता रहे हैं, ठीक है? Beautiful clothes they wore. They means the film, people in the film. The people in the film. And I can explain. Peter, there are some movies about pastime, For example, there was a movie in India called Jodha Akbar. Okay. So a lot of people watch these films. These are called period films. These are called, when they talk about a pastime, they are called period films. There was a period film called Lagan. So a lot of people like watching period films because in period films, the clothings are different. They don't wear the clothes like today.
And some people find it very interesting to look at those clothes, right? So she's talking about the clothes they wore. They means the people in the films. Okay. Okay. And I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favourites. I loved the actress Keira Knightley in it. She was excellent. And I really loved the beautiful clothes they wore. I love the beautiful clothes they wore. Okay. And I love the beautiful gift you guys brought me on or for Teachers' Day. I still have it, the watch, right, guys? You guys got a watch, right? You guys got me a watch for Teachers' Day. Who went to buy it? Huh? Afzal? Afzal and Rudra. Okay. Afzal has been absent. Afzal, he's your uncle. Where is he? Mama, uncle in English, mama, uncle, chacha, masa, sabek. English is here. Is your uncle. Okay. So where is he? He is in Patna. He's in Patna. Where is he? He's in Patna. Okay. All right. All right. Moving on. You see, I know the book very well. You see, I know the book very well. Which book? The book. बोलने का मतलब समझ रहे हो ना? Pride and Prejudice. You see, I know the book very well. And I loved it when I saw it on TV. saw it on TV. I loved it when I saw it on TV. There was a series. Like Jodha Akbar was a series too. And there was a movie. Which was more fun? The series. The film was a flop. Although we had Hrithik Roshan and Aishwarya Rai and this, but the film didn't do very well. But the series was such a big hit. It has very high TRP ratings. Okay. I thought the film would be rubbish. I thought the film would be rubbish. सुना ये line? I thought the film would be. मुझे लगा कि फिल्म जो होगी वो बेकार होगी. I thought the film would be rubbish. I thought. मुझे लगा था. The film would be rubbish. Okay. मुझे लगता है, I think, film बेकार होगी. The film will be rubbish. पता है ना? पता है कुछ? Unit 7, American president said we would land a man on the moon. Remember? Connection बनता जाता है अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हैं तो. 15 दिन 20 दिन पे अगर आपको रिवीजन मिल जाए और क्या चाहिए? Okay. I thought the film would be rubbish. But I liked it even more than on TV. But I liked it even more than on TV. But I liked it even more than on TV. I liked it even more than on TV. I thought the film would be rubbish, and I know I explained why she might have thought. It was a long story, and long stories are usually a very, very bad film. But this is an exception, you know. Even I wasn't expecting Pride and Prejudice to be such a big, hit, because it's a long story. There are so many events there as well. But everything has been captured so beautifully in this film. The credit goes to the director. It's just so romantic. It's just so romantic. 3. Frank. I love Western films. I love Western films. I love... Okay. I think it's because I played cowboys and Indians all the time when I was a boy. उसने रीजन बताया. I think it's because ये लाइन सोचना. कोई बात बोलने के बाद जरा अच्छे से सुन लो बेटा. Frank. I love Western films. और मैं एक बात के लिए बताऊं, मुझे मेरा दिल टूट जाएगा अगर मुझे एहसास होगा ना कि आप लोग पहली बार यहाँ सुन रहे हैं, जबकि मैंने कल ऑडियो भेज दिया था और आप नहीं सुने घर पे, आप यहाँ सुन रहे हैं. ये अगर ऐसा मुझे पता चलेगा ना तो आई विल टेल यू, आई विल बी हार्ट ब्रोकन, बिकॉज मुझे पता है आप सीख नहीं पाओगे. इस गलती की वजह से नहीं सीख पाओगे क्योंकि आपने घर पे ऑडियो फाइल नहीं सुना. आपको वो फायदा ही नहीं होगा. अच्छा, ये ऑडियो फाइल कोर्स का हिस्सा है, मैंने कुछ तो उम्मीद करके ही दिया आपको, और अगर इसका फायदा नहीं होगा तो फिर ऐसे कई और मौके होंगे जिसका फायदा नहीं होगा. फिर ये कोर्स क्या हो जाएगा आपके लिए? इनइफेक्टिव. और उसकी वजह बस आपका जिद कि मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूं. अगर मैं आपको कुछ लिखने के लिए होमवर्क दूं, आप करते हैं, ठीक है,
मैं आपको कुछ खाली जगह भरने के लिए दूं, आप करते हैं, और मैं आपको कुछ सुनने के लिए दूं, आप ना करें। इससे ये पता चलता है कि नए चीज करने में आपको मुश्किल हो रही है, और आप जहां मुश्किल होती है आप भाग जाते हैं। अब मुझे बताइए, भागने वाले मुश्किल से कौन सा बड़ा जंग जीतते हैं? कभी भी कोई बड़ी चीज हासिल करते हैं क्या? तो बस एटीट्यूड क्लियर कर लीजिए कि नहीं, चाहे मुश्किल जितनी हो, सुनना है, ऑडियो फाइल ईयरफोन्स लगा के सुनना है। इसलिए मुझे बताना भी मत, अगर तुमने नहीं सुना है तो मैं सच में हैंडल नहीं कर पाऊंगा ये। मैं चला जाऊंगा क्लास बंद करके, ये हो जाएगा मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा झूठ भी रहने दो अभी कि हाँ सुन लिया होगा तुम लोगों ने, ऐसे ही सोचने दो मुझे, बिकॉज आई नो कि कुछ लोगों ने नहीं सुना, ये भी उतना ही पक्का है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि आप आज या कल एहसास करें कि आप नहीं सीख रहे। मतलब नहीं सीखना मतलब समझ रहे ना, बाकी यहां जा रहे आप यही हैं, तो यही तो हो गया नहीं सीखना, और क्या। तो प्लीज अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ लिसनिंग। अभी बताया तुम्हें इसके थ्रू किसने कैसे सोचा। अगर इसके पास ऑडियो फाइल होती तो और ज्यादा बेहतर होता, ठीक है। तो the line was, I, you know, I like Western films. I think it's because I think it's because I played cowboys and I played cowboys and Indians Indians all the time when I all the time when I was a child, when I was a boy. So, cowboys and Indians is a game. Cowboys and Indians, it's a game. Just like we have Chor Sipahi. Okay, so Americans play a game, cowboys and Indians. Cowboys and, by the way, the word Indians does not refer to us. ये इसलिए मैं ध्रुव राठी को गाली निकालता हूं, कमीना इंसान, ठीक है। वो जब भी पॉलिटिकल वीडियो बनाएगा ना, वो धूर धूर बना रहा होता है अपने ऑडियंस को, कि उसके जो ढेर सारे ऑडियंस है जो मोदी विरोधी हैं, ठीक है, तो उनको बनाए रखने के लिए वो झूठ बोलता है साला, सॉरी। लेकिन सच यही है, क्योंकि मैं टीचर हूं ना, तो टीचर्स, क्या नाम उनका, वो सर हैं जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, भाई ना उनको गोली मारो, दिव्य कीर्ति सर। वो आदमी जो है कम से कम सच्चाई बोलते हैं, चाहे जिसकी फेवर में चला जाए, ठीक है। तो देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन कि इंडियन वर्ड गाली था कि रिस्पेक्ट था, ठीक है। तो गाली ही था, इंडियन वर्ड गाली ही था, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि रियलिटी है। तो मुझे बताओ वहां कौन सी इंडस नदी चल रही थी, क्यों वहां के लोगों को इंडियन बोला उन लोगों ने? अमेरिका में कौन सी इंडस नदी, कुछ लोग तुम्हारे ये वो क्या नाम था, ध्रुव ध्रुव राठी, वो बोलता है क्या है कि हाँ इंडस नदी थी ना, इसलिए इंडिका और ये सब चल रहा था बहुत समय से, ये कोई गाली नहीं थी, ये गाली थी। इंडियन बोलने का मतलब उनके था अनसिविलाइज्ड। उनके इंडियन बोलने का मतलब क्या था? इसलिए बोलते थे यू ब्लडी इंडियन। उनके बोलने का मतलब था यू ब्लडी अनसिविलाइज्ड पीपल, ठीक है, वो ऐसा आपको बोलते थे, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा अमेरिका में कौन सी इंडस नदी है जिसकी वजह से उसको इंडियन बुलाया था उन लोगों ने? तो काउबॉयज एंड इंडियंस, मैं बता दूं, इंडियंस वर द नेटिव पीपल ऑफ दैट प्लेस। नेटिव पीपल मतलब बेटा जो पहले से रह रहे उसको नेटिव कहते हैं, ठीक है। जो बाद में आए वो बाद में आए, तो जो पहले से रह रहे उसको नेटिव कहते हैं। तो अमेरिकन दैट यू नो लाइक डोनाल्ड ट्रम्प एंड बाइडन, दीज आर नॉट अमेरिकन नेटिव, ओके, दे केम फ्रॉम यूरोप in the 16th century, 15th century, a lot of, Europeans went to America, और वो वहां जाकर बस गए, उन्होंने कंट्रोल किया। फ्रेंच पीपल, अमेरिकन पीपल, स्पेनिश पीपल, दे ऑल हैड देयर कॉलोनीज। अमेरिका इज 4 times बिगर देन इंडिया। तो जितना बड़ा जमीन, जितने लोग, जितना काम, जितना सोना कोयला, जो चाह रहे थे निकाल रहे थे, सब एक्सप्लॉइट कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से कुछ ने, व्हाइट लोगों में से, यानी यूरोपियन ने कहा कि अब हम इंग्लैंड को, रानी को नहीं देंगे पैसा, क्वीन को नहीं देंगे, भेजेंगे यहां से टैक्स। उन्होंने, उसमें नाम था इनका, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, हाँ नाम बोलिए, द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉशिंगटन। वो एक लड़ाई लड़े, और उन्होंने, वो खुद भी उधर से ही थे, इंग्लैंड से ही, और उन्होंने भगा दिया इन लोगों को, ठीक है, बोला अब नहीं देंगे। तो ये ऐसा नहीं था कि अमेरिका की आजादी की लड़ाई, ऐसा ना समझिए इसको, प्लीज अंडरस्टैंड, चीजों को पर्सपेक्टिव में समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका की कोई आजादी की लड़ाई नहीं थी वो। अमेरिका के जो यहां से जाके लोग रह रहे थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जबकि यही के लोग थे। बस ये समझिए कि पैसा फायदा लेने वाला लड़ाई था। जो असली अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन, वो कभी आजाद नहीं हुए, उन्होंने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उनको सिर्फ मारा काटा गया। क्रिश्चियनिटी फैलाने के चक्कर में उनको बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। क्रिश्चियनिटी ऐसे फैली है तलवार और बंदूक से, वहां पे बहुत लोगों को मारा,
कनाडा में बच्चों को मतलब लाशें बिछा दी, और ये सब चीज को एक्नॉलेज नहीं करते। कुछ लोग आज हैं व्हाइट लोग जो कहते हैं कि हाँ हमने बहुत गलत किया, क्योंकि ये सब रियलिटी है। दे आर ऑनेस्ट पीपल एंड दे वांट टू टॉक अबाउट इट कि हाँ ये सब हुआ है, मानिए इस चीज को। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ठीक है, ये तीनों जगह जो लोग वहां के ओरिजिनल लोग थे, दे आर नॉट देयर एनी मोर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट भी नहीं है आज। दे लिव देयर सम ऑफ देम, बट वो रेलिवेंट नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। आप वजूद में रह गए, बड़ी बात है, नहीं तो इन लोग के हसरत बड़े अलग थे, ठीक है। क्योंकि बता रहा हूं वो भी कॉलोनी, कनाडा वाज आल्सो फ्रेंच कॉलोनी एंड इंग्लिश कॉलोनी, अमेरिका वाज स्पेनिश कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी एंड इंग्लिश कॉलोनी। दे वर फाइटिंग विद ईच अदर कि हम ज्यादा लैंड लेंगे इस जगह का, हम ज्यादा लैंड लेंगे, क्योंकि वहां से प्रॉफिट लेते थे, इसलिए रिच हुए। यूरोप जो बना है रिच, ये इनके कीमत पे बना है। ये सब रियलिटीज हैं, आपको जानना होगा। पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि मामला पॉलिटिकल हो जाता है, बट फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू ये सब रियलिटी है। तो काउबॉयज एंड इंडियंस, तो उसमें इंडियंस कौन होता था पता है? नेटिव्स, और काउबॉयज विदेशी जो यूरोपियंस वहां गए। तो काउबॉयज एंड इंडियंस, अब इट्स अ गेम। अब इस गेम में मैं आपको बता दूं फिर से, इंडियंस, काउबॉयज एंड इंडियंस में काउबॉय ही बेहतर होता था और इंडियन ही नीचे रहता था खेल में। जैसे हमारे यहाँ चोर सिपाही में एक चोर होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वही गेम नहीं है, सिमिलर गेम। ओके, काउबॉयज एंड इंडियंस। ओके, तो ये कह रहा है आई लव द वेस्टर्न फिल्म्स, इट्स बिकॉज मतलब मुझे पसंद था क्योंकि, इट्स बिकॉज हाँ, I played cowboys and Indians all the time when I was a boy. Acha, he said told, okay, he gave the right word. It's because he's been listening to me for a long time. He's been listening to me for a long time. तो it's because करके आप बहुत सी लाइन बोल सकते हैं, सुनिएगा। I don't drink wine. It's because as a child I saw my grandfather's bad condition because of drinking, his addiction. तो इट्स बिकॉज करके अब पीछे वाली बात को इट ले आते हैं। फिर से बताता हूं, आई डोंट वांट टू मैरी हर, एक बात मैंने बोल दी, अब इस बात की वजह बताना है। फुल स्टॉप दे दिया मैंने, फुल स्टॉप दे दिया है। आई डोंट वांट टू मैरी हर, फुल स्टॉप। इट्स बिकॉज आई एम नॉट रिच इनफ, इट्स बिकॉज आई एम नॉट, हाँ, तो रीजन मेरे पास उतने पैसे नहीं है। शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। ओके, इट्स बिकॉज, इट यहां पर क्या है, जो फैक्ट मैंने पीछे बोला, आई डोंट वांट टू मैरी हर। तो आप लोग थोड़ा सा इट्स बिकॉज वाली लाइन जरूर प्रैक्टिस करना। एक बात बोल देना कोई भी, जैसे दिस चिकन करी इज नॉट वेरी टेस्टी, इट्स बिकॉज द चिकन वॉज टू बिग। इट्स बिकॉज मैंने बोला दिस चिकन करी इज नॉट वेरी टेस्टी, फुल स्टॉप दे दिया। अब इसके पीछे की वजह बताना चाह रहे, कैसे बोलेंगे? खाली बिकॉज से नहीं शुरू कर सकते, बोलना पड़ेगा इट्स बिकॉज the chicken was too big. Okay, the chicken pieces were not tender, the chicken pieces were not chicken was not small, होता है ना, big chicken doesn't taste good, like that, कुछ भी इस तरह से। हम सडनली मैं ऐसे टॉपिक्स बोलना नहीं चाहता, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। जो मैंने पीछे टॉपिक टच कर दिया ना, आई डोंट वांट टू टच देम। मेरी पर्सनैलिटी बड़ी ज्यादा परेशान हो रही है। एक तरफ मुझे ये सब टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, और एक तरफ मुझे पता है कि इंडिया के लोग जाहिल हैं, सॉरी, ओके, तो वो पॉलिटिकली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं कोई बात से। तो मैं ऐसे टॉपिक को छूना भी नहीं चाहता अपने क्लास में, क्योंकि मेरे लिए आप बच्चों का सीखना मायने रखता है, ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें निकालना नहीं। और वो निकल जाती हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यहाँ पर से, मुझे लगता है नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं करना था। आई एम नॉट somebody who likes being uncomfortable, making people sad and angry and something। तो खास करके मेरे स्टूडेंट के साथ मेरा रिश्ता क्या होता है कि मैं गार्जियन हूं और आप मेरे बच्चे हैं, तो मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे आपका नुकसान हो जाए। अब मैं बताता हूं क्या होता है नुकसान। इस दिन मैंने शम्स को डांट लगाई, ठीक है, तो एक मेरे मन में ये बात चलती है कि मैं अगर डांट लगा दूं किसी को जरूरत से ज्यादा, तो वो लड़का मेरे से घबरा करके क्लास छोड़ देगा, ठीक है, पैसे पे कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन क्लास छोड़ देगा तो वो सीख पाएगा। तो अब मैं डांट दूं मेरे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उसका तो नुकसान हो गया ना, कि वो डर के भाग गया क्लास से। तो मेरे दिमाग में एक बात चलती है कि जो क्लास में आ गया ना, वो सीख के जाए, और इसमें मेरी मेरी सफलता मुझे लगती है, ठीक है, और मेरे लिए इमोशनली इंपॉर्टेंट भी होता है कि मेरे साथ रहा, उसका फायदा हुआ, ठीक है। तो
कई बार ये टॉपिक्स जो होते हैं, आप लोग को हमेशा चाहूंगा कि मुझे ना कभी भी और किसी नजरिए से मत देखना, पॉलिटिकल नजरिए से मत देखना, ठीक है? मैं हमेशा एक टीचर के नजरिए से बात करूंगा, ठीक है दोस्तों? बिकॉज आई रियली डोंट वैल्यू पॉलिटिक्स। ओके, क्लास में तो मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करना चाहता, कभी नहीं। दोज थिंग्स विच आर रेलेवेंट टू आवर इन अ सोसाइटी, जैसे मैंने उस ध्रुव राठी को क्यों बोला साला, क्यों बोला गलत? क्योंकि वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। वो आपका बोलता है कि हम आपके टीचर, हम आपको सच बताएंगे, और बोलता है कि आपको झूठ। अरे भाई, तुम्हारे तुम्हारे मान लो मेरे बच्चे तबरेज कि तुमने एक सेंटेंस में गलती करी है, तो मेरा फर्ज बनता है वो गलती बताना, कि उस गलती को ढक देना। वो चाहता है कि तुम जो मानते हो तुम मानते रहो, तुमको सच नहीं पता चलना चाहिए, उसके साथ उसके भक्त बने रहो, उसके सुनते रहो बस। ये ऐसे लोग, सारे लोग खराब होते हैं जो भी आपकी गलती को सामने से बताना नहीं चाहते। हाँ, अच्छे से बताइए, मुझे पसंद है कि आप अच्छे से बताइए, बिना हर्ट किए फील। जैसे मैं आपकी गलती को हल्के से बताता हूँ, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, ताकि उसको आप पॉजिटिवली लीजिए। वो उसका फर्ज बनता है कि सही से बताए। लेकिन ये बोलना कि इंडिया हमेशा से पॉजिटिव वर्ड था, ये झूठ है बेटा। आपको मैं बताऊं, दुनिया के कई हिस्सों के लोगों को उन्होंने इंडियंस बोला था। अमेरिका के लोगों को इंडियंस बोला, वेस्ट इंडीज बोला है, पता है? वेस्ट। और हम लोग को ईस्ट इंडीज बोलता था। पास्ट में क्या बोला जाता था? ईस्ट इंडीज, ठीक है, इंडिया। क्योंकि वहां भी जो लोग थे उनको भी इंडियंस बोला, वो भी ब्लैक थे, तो वो गोरे होने की वजह से रेसिस्ट थे वो। हम लोग सांवले हैं, ब्राउन, ठीक है, तो वो हम लोग को रेसिस्ट होने की वजह से हम लोग को नीचा देखे, सबसे पहली चीज, बिकॉज वी वर नॉट टॉल लाइक देम। और बाद में जब उनको बहुत सी चीजें यहां पता चली, तो उन्होंने मैक्स मूलर की वो क्या नाम है, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी घुसा दी हमें, कुछ हमारे कुछ गोरे रंग की वजह से, पंजाबियों की वजह से, ठीक है? तो ये सब इन लोगों ने जो करा है, बहुत ही कह सकता हूं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और आप में से कई लोग एकेडमिकली नहीं समझना चाहते हैं, ठीक है? पास में कोई नहीं जानता कौन कहां से आया नहीं आया, ठीक है? एवरीबॉडी नोज दैट वी आर ऑल फ्रॉम अफ्रीका। सच्चाई तो यही है ना, वी आर ऑल फ्रॉम अफ्रीका, सारे हम अफ्रीका से ही आए हैं, ठीक है? इसके बारे में जितनी ज्यादा पढ़ाई करिएगा, ज्यादा जानिएगा, इतना जरूर जानिए। कभी भी मैं कोई ऐसी बात बोलूं जो आपके ओपिनियन से मैच ना करे, ठीक है, तो उसको पॉलिटिकल मत मानिएगा, उसको समझिएगा ये एकेडमिक बात बोल रहा है, जानने की जरूरत है कि इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं, ठीक है? आई नेवर एक्सप्रेस माई पॉलिटिकल ओपिनियन इन माई क्लास। आई डोंट केयर अबाउट माई पॉलिटिकल ओपिनियन, एक्चुअली आई डोंट हैव ए पॉलिटिकल ओपिनियन। ओके, फाइन, आई विल सी यू गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।